Children, how are you all today? Oh, very nice. You all are fine. I am also fine. Thank you, children. Love you all. So, how was your morning? सुबह सुबह एनर्जी लेके आए हो, मिल्क पी के आए हो ना? Yes. तो चलो आज कुछ अच्छा और नया नया कुछ लर्न करते हैं. So, today we are going to learn about community helpers. Community helpers. What is community helpers? So community helpers are the people who help us with our health and with our well-being. Means what? जो हमें हमारे हर काम में हेल्प करते हैं. जैसे आप जो मिल्क पीते हो, कौन लेके आता है? मम्मा थोड़ी लेके आती है. मिल्क वाले मिल्क भैया लेके आते हैं ना, मिल्कमैन. वो हमारे घर पे प्रोवाइड करते हैं मिल्क. वैसे ही द पीपल, सो मैनी पीपल आर देयर हु हेल्प अस इन अवर वेल बीइंग. मतलब हमें जो भी रूटीन में चीजें चाहिए वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? आवर कम्युनिटी हेल्पर्स. डू यू नो दे गिव देयर लाइफ टू द सोसाइटी. दे हेल्प अस सो इन सो मैनी थिंग्स. लाइक farmer, he grow crops, then only you are able to eat, right? They gives us food, right? They grow crops, then only we are able to eat. Then doctor, when you are sick, when you have a flu, when you have a cold, who helps you? Doctor helps you. You go to the doctor, he gives you the good advice. He gives us medicine, or else he also gives us injection, which you all don't like, I know, but they help us. So today we are going to learn about community helpers. Few community helpers we will learn. So first of all, आपको पता है कौन आने वाला है हमारे पास? So पुलिस ऑफिसर. पुलिस ऑफिसर आप लोगों ने देखी है? पुलिस अंकल, पुलिस आंटी देखे है ना? Yes. They help us in which way? आपको पता है कैसे हेल्प करते हैं वो हमें? They help us when we need them. When there is something, the robbery happens. Thieves, चोर आते हैं ना, कहीं पे चोरी करके जाते हैं ना, तो हमें किसको कॉल करना चाहिए? We have to call police officer. We have to call in police station. Do you know they always wear smart khaki uniform. पुलिस को कभी यूनिफॉर्म के बिना देखा है? हमें पता ही नहीं चलेगा that they are police officers. Though they are in duty, they always wear khaki smart uniforms. They always have a stick on their hand, small stick. देखिए उनके हाथ में. Okay, they also carry gun over here. Do you all know they always carry gun? Yes, they need gun when there is a robber, then when there is a thief, they need this. Okay, then what helps they do us? जब हमें कुछ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा है पुलिस वैन फटाफट से आ जाती है एंड दे हेल्प अस. सो डू यू ऑल नो नाउ हाउ पुलिस ऑफिसर्स हेल्प अस, राइट? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. यस यस बेटा, यस, दे ऑल हेल्प इन सो मैनी थिंग्स टू अस, राइट? ओके, सो अभी आपको पुलिस ऑफिसर, डू यू ऑल नो व्हाट पुलिस ऑफिसर्स आर डूइंग, राइट? सो चलो नया कम्युनिटी हेल्पर को बुलाए. चलो, who is coming? Who is coming? Oh, it's a carpenter. Carpenter क्या होता है? Do you all know who is carpenter? No. Okay, चलो आज मैं आपको I will teach you who is carpenter. Carpenters, आपके घर में सब फर्नीचर है? Now you are sitting on bench. So bench is also one furniture. कौन किसने बनाई? आपने बनाई? शनाया आपने बनाई? नहीं ना, मम्मा ने बनाई. पापा ने बनाई? नो. हु मेड इट? कारपेंटर मेड्स फर्नीचर. अगर हमारे घर पे कुछ टूट जाता है, हमारा बेड टूट जाता है, हमारा टेबल टूट जाता है, हु रिपेयर्स दैट? ब्रोक हो जाती चीजें कौन रिपेयर करता है? द वुड आइटम्स विच ब्रोक. सो वी नीड टू कॉल कारपेंटर. ही हेल्प अस टू रिपेयर द आवर फर्नीचर. और वी वांट टू मेक सम न्यू फर्नीचर. हु हेल्प अस? Carpenter help us with their tool. They have so many tools. With the help of their tools, they make a furniture. From which they will make a furniture? Steel में से बनाएगा? Iron में से बनाएगा? No, they will help us to make furniture from wood. जो हमारे trees होते हैं ना, उसका जो wood होता है ना, wood, उसको उनसे special tools they have. From that tools they make a good furniture.
So do you all now know about carpenter, right children? Yes, हाँ ये टेबल भी बेटा कारपेंटर बनाते हैं, राइट राइट, यस. नाउ चलो अभी कुछ और कम्युनिटी हेल्पर्स को बुलाए. कौन आ रहा है? देखो देखो देखो, फाइंड इट, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग. सो इट्स अ सरप्राइज. कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? सो इट्स पोस्टमैन. पोस्टमैन कौन होता है? पोस्टमैन. Do you know postman has a bicycle? He always travel on a bicycle and he also wear a khaki uniform. But police officer and a postman has a different uniform. Both are not wearing the same khaki uniform. Understood? Okay, फिर no more confusion ma'am. उसके पास भी khaki uniform है. So this has a different type of khaki uniform. He always wears a bag. In their bag there is so many letters. और वो कहाँ से आता है? आपको पता है पोस्टमैन आपके घर से, मेरे घर से आता है? नो, ही कम्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. सो पोस्ट ऑफिस, राइट? एंड पोस्टमैन व्हाट दे डू? तो whenever we write a letter or whenever we want to share parcel with our friends or relatives, तो कौन पहुंचाता है? हम तो देने नहीं जाएंगे. हमें अगर आउट ऑफ सिटी भेजना है, हमें सिटी में ही दूर भेजना है, तो हम थोड़ी जाएंगे. What we have to do? We have to post a letter or we have to go to the post office and give our parcel to the post office. They will distribute according to the areas. हर एक एरिया में तो एक पोस्टमैन नहीं जा पाएगा. So there are so many postmen. They are dividing in a area groups. Then they will collect their areas groups and they will collect all the letters and all the parcels and they will deliver to our home. आपके घर पे देखा है ना, कुरियर, पार्सल, लेटर लेके अंकल आते हैं ना बाइसिकल पे, ट्रिंग 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 करके बाइसिकल पे आते हैं ना. सो डू यू ऑल गेट इट? हु इज पोस्टमैन? यस बेटा, आपके घर पे लेटर आया था, आपकी दीदी ने भेजा था. वेरी नाइस. सो यू ऑल्सो हैव टू राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड्स और योर siblings, your cousins. Yes, you have to write, you have to send them good love. Then hug. आप भेज सकते हो ना कि lots of love to my dear friend. और वो हमें कहाँ पोस्ट करना है? हमारे घर के बाहर पोस्ट बॉक्स होता है. In different areas there is a post box. We have to drop a letter in a post box. Postman will come. They will collect all the letters from the post box and they will go to the post office. Yes, and from there it will delivered in a post office van. उसकी एक स्पेशल वैन आती है. Yes, it's a vehicle जिसमें बहुत सारे लेटर्स, कुरियर्स इकट्ठा करके फिर उसको पोस्ट किया जाता है जो एरिया है वहां पे. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? यस. नाउ हु इज कमिंग? चलो सोचो सोचो, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है? सो हियर इट कम्स. Firefighters. They have a big role in our society. Understood? अगर कहीं पे भी आग लगती है, मैं या आप बुझा पाएंगे? We can stop fire? No, we can't. We have to call at fire station. So they are staying at fire station. They have a duty on fire station. We have to call at fire station that there is a fire happens and occurs over here. Please come and stop the fire. Then they will fast they will come. Walk करके तो नहीं आएंगे. How will they burn the fire? How will they stop the fire? So they have a special vehicle. It's called fire engine. आपने देखी है? टंग 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 टंग, या तो सायरन बजा के आती है, रेड कलर की बिग इंजन. देखिए ना आपने? Yes, they come in fire engine and they have a big tank in that fire engine. They are in group. They have to come in group so they can help us quickly. Understood? अगर एक person आया, one person will come. How will he stop? अगर अंदर कोई फंसा है, do you know they also help people who stuck in the fire. जहाँ आग लगी है वहाँ कुछ बंदे या कुछ मम्मी पापा कुछ फ्रेंड्स फंसे, तो कौन इसको निकालेगा? We can't do that. We don't have that much strength. So these people help us. They will go inside wearing some uniform and they help us to come out from fire. And also they have a special tools, hose pipe and all. From that they will stop fire. Understood?
We don't have to do daring to stop fire. We can't do that. We will burn ourselves. So from fire stop, who will help us? जो बर्न होती है ना उसे कौन हमें हेल्प करता है? फायर फाइटर्स हेल्प अस. अंडरस्टूड? So do you all get it? All the our community help us. So we have firefighters. We have police officer. Yes, she's very smart, right? Yes. Now whenever you see a police officer, you have to salute and you have to give the respect to the police officer. Okay. We also can salute the firefighters. They are also our community helpers who help us in stop burning. Understood? So today we learn so many community helpers, right? Now I am going to recite a poem. Do you all want to know the poem? Okay, then everyone stand up, stand up, stand up. Teacher, teacher, what do you do? Repeat after me, children. Teacher, teacher, what do you do? I teach reading and writing too. I teach reading and writing too. Teacher, teacher, what do you do? I teach reading and writing too. Then who will come? Doctor. Doctor, doctor, what do you do? Doctor, doctor, what do you do? I treat you when you are sick with cold and flu. I treat you when you are sick with cold and flu. Then firefighters, firefighters, what do you do? Firefighters, firefighters, what do you do? I stop fire from burning you. I fight with fires to burning you. Understood? Postman, postman, what do you do? कहाँ गया postman? चलो उसको पूछते. Postman, postman, what do you do?